Good morning everyone and welcome back to my another video, and here we are going to talk about MCQs and how we can get full marks in them. So without wasting any time, let's get started with our video. So when attempting MCQs, the first thing which you have to do is to read the question and the options. पहले आप पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे, पहले आप क्वेश्चंस पे आओगे, क्वेश्चन रीड करोगे and then we'll move to the paragraph for the location. Here the question says, when discussing the debate on literacy in education, the writer notes that. इसका मीनिंग क्या बना? इसका मीनिंग ये बना कि जब लिटरेसी पे डिबेट हो रहा था तब राइटर ने क्या नोट किया. फर्स्ट ए ऑप्शन इज चिल्ड्रन कैन नॉट रीड एंड राइट एज वेल एज दे यूज्ड टू. वो उतनी अच्छी तरह से लिख और पढ़ नहीं सकते जितना कि वो पास में करते थे. सेकेंड इज एकेडमिक वर्क हैज इम्प्रूव्ड ओवर द लास्ट 20 ईयर्स. जो एकेडमिक वर्क है वो इम्प्रूव हुआ है ओवर द लास्ट 20 ईयर्स. थर्ड इज there is a evidence that literacy is related to external factors. And the last option is there are opposing arguments that are equally convincing. और लास्ट ऑप्शन ये है कि वहां पर अपोजिंग जो आर्ग्यूमेंट्स थे और वो इक्वली ही कन्विंसिंग थे. सो ये हमारा क्वेश्चन है. नाउ लेट्स मूव टू द पैराग्राफ और देखते हैं पैराग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है. So here start reading the paragraph itself, and it says, are the electronic media exhibiting illiteracy and making our children stupid? On the contrary, says Colin McCabe, they have the potential to make us truly literate. So ये उसकी जो एक starting line है वो दी गई है. Now the main paragraph says, the debate surrounding literacy is one of the most charged in education. On the one hand, there is. So यहाँ पर देखिए डिबेट की बात हुई है और क्वेश्चन में भी डिबेट की बात हुई है, विच मीन्स कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक. और जो हम लोकेशन जो पढ़ रहे हैं दैट इज द करेक्ट वन, क्योंकि हमें हमारा कीवर्ड है वो मिल चुका है. नाउ वी हैव टू लुक फॉर द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन. On the one hand, there is an army of people convinced that traditional skills of reading and writing are declining. On the other hand, a host of progressive protest that literacy is much more complicated than a simple technical mastery of reading and writing. This second position is supported by most of relevant academic work over the past 20 years. These studies argue that literacy can only be understood in its social and technical context. In Renaissance England, for example, many people could read, then could write, and within reading, there was a distinction between those who could read print and those who could manage the more difficult task of reading manuscript. An understanding of these earlier periods help us understand today's crisis in literacy debate. अभी देखिए पैराग्राफ पढ़ के जो आपको पहले आपके माइंड में थॉट गया होगा वो ये होगा कि सभी चीजों की तो बात की गई है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स मूव बैक टू आवर क्वेश्चंस और देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है. तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गिवन था, इट सेज दैट चिल्ड्रन कैन नॉट रीड एंड राइट एज वेल एज दे यूज्ड टू. इसकी देखिए पूरे पैराग्राफ में कहीं पर आपको दिख रहा है कि इसकी बात की गई हो. ऑन द अदर हैंड देयर इज एन आर्मी ऑफ पीपल कन्विंस्ड that traditional skills of reading and writing are declining. On the other hand, a host of progressive protests that literacy is much more complicated than a simple technique of mastering of reading and writing. So basically इसकी कहीं पर भी ये clearly mention नहीं, although they have mentioned that it is declining, but that is one thought और उसके लोग opposite thought के भी हैं, but this is not clearly mentioned anywhere कि बच्चों में जो वो पहले पढ़ सकते थे अच्छी तरह से वो अभी नहीं पढ़ सकते. So जो फर्स्ट ऑप्शन है हम उसको वो कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे, बिकॉज दिस इज द मेथड विच वी फॉलो व्हाइल डूइंग द एमसीक्यूज. वी एलिमिनेट द ऑप्शंस विच आर नॉट अप्रोप्रिएट और विच आर नॉट करेक्ट. और लास्ट में जो हमारे पास ऑप्शन बचेगा हम फिर उसका पढ़ेंगे दैट वेदर दैट ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट. So second option says that academic work has improved over the last 20 years. Although there is mention of 20 years, but उन्होंने क्या लाइन कही है यहाँ पे, उन्होंने कहा है दिस सेकंड पोजीशन इज सपोर्टेड बाय मोस्ट ऑफ द रेलेवेंट एकेडमिक वर्क ओवर द पास्ट 20 इयर्स. जो सेकंड थॉट था जो कह रहा था कि हम लिटरेसी को सिर्फ रीडिंग और राइटिंग के ऊपर डिपेंड सिर्फ इसी बेसिस पे जज नहीं कर सकते, और इसको सपोर्ट करने के लिए जो 20 इयर्स में वर्क हुआ था वो उस वर्क ने से सपोर्ट किया था. बट ये कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया
that the work has been improved in the last 20 years. तो ये वाला ऑप्शन भी हम काट देंगे. And a last option we have is there are opposing arguments that are equally convincing. So opposing हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पर. These studies argue that literacy can only understood in its social and technical context in Renaissance England. For example, many people could read, then could write, and within the reading there was a distinction between those who could read print and those who could manage the more difficult task of reading manuscript. An understanding of these earlier period help us understand today's crisis in literacy debate. So इस चीज की कहीं पर भी बात की नहीं की गई that the opposing arguments were equally convincing. So इस चीज की कहीं पर बात नहीं की गई. So we are only left with third option. और third option क्या है? So the third option says there is evidence that literacy is related to external factors. So कौन से external factors की यहाँ पर बात की गई है? You can see I have underlined it for you. You can see on your screens. It says the studies argue that literacy can only be understood in its social and technical context. So external factors हो गए social and technical context. और इसी ऑप्शन की यहाँ पर बात की गई है. जो बाकी ऑप्शंस हैं उनकी यहाँ पर कहीं पर भी क्लियरली बात नहीं की गई. इसलिए हमने उन सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट किया and we are only left with the C option and that is our correct answer. Let's move to the next question. So the second question says in the fourth paragraph the writer's main point is that. So एक अच्छी खबर ये है कि we already know the location कि हमें आंसर कहाँ पर मिलेगा. So we have to look for the information in the fourth paragraph only. The first option is the printing word is both gaining power and losing power. Second is all inventions bring disadvantages as well as benefits. Third is those who work in manual jobs no longer need to read. And last one is the media offers the best careers for those who like writing. So let's see what they have given in the paragraph. So in the paragraph, they have said the decision of some car manufacturers to issue their instructions to mechanics as a video pack rather than as a handbook might be taken to spell the end of any automatic link between industrialization and literacy. Which means कि कई कार मैन्युफैक्चरर्स ने ये फैसला किया कि जो वो हैंडआउट्स देते हैं अपने वर्कर्स को that should be a video pack rather than a handbook, and this starts the end of automatic link between industrialization and literacy. On the other hand, it is also the case that ever increasing number of people make their living out of writing, which is better rewarded than ever before. Schools are generally seen as institutions where the book rules. Film, television, and recorded sound have almost no place, but it is not clear that this opposition is appropriate. While you may not need to read and write to watch television, you certainly need to be able to read and write in order to make programs. So basically अभी हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, इसका मीनिंग समझा. लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस और ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास क्या क्या है और उन्होंने क्या कहा है किस ऑप्शन में. सो ऑल इन्वेंशंस ब्रिंग डिसएडवांटेजेस एज वेल एज बेनिफिट्स. सो यहाँ पर पहली बात तो कहीं पर भी देखो ऑल्दो द मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ इज सेम कि ठीक है कहीं बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस हैं उनके मेंशन भी किए हैं, बट दिस इज नॉट क्लियरली मेंशन कि सारी जो इन्वेंशंस हैं उसके बेनिफिट्स भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. सो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन हम क्रॉस कर देंगे बिकॉज कहीं पर भी ये क्लियरली मेंशन नहीं है. सी ऑप्शन इज दोज हु वर्क इन मैनुअल जॉब नो लॉन्गर नीड टू रीड. सो दिस इज नॉट करेक्ट. ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि जो भी मैनुअल जॉब्स में है दे डोंट नीड टू रीड. Although it have mentioned कि ये ख़त्म हो रहा है ये एरा लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन और लिटरेसी के बीच में लिंक ख़त्म हो रहा है, बट इट इज़ नॉट मेंशन कि जो लोग मैनुअल वर्क करते हैं दे डोंट नीड टू बी लिटरेट या उन्हें लिटरेसी नहीं चाहिए. सो ये ऑप्शन भी हम क्रॉस ऑफ करेंगे. नाउ द डी ऑप्शन इज
The media offers the best career for those who like writing. So मीडिया की यहाँ पर कहीं पर भी बात नहीं की गई, although it has said that on the other hand it is also the case that ever increasing number of people make their living out of writing. तो उनकी मीडिया की कहीं पर नहीं बात की गई, उन्होंने एक बेसिक सी बात की है कि यस नाउ द पीपल आर मेकिंग careers out of their writing or that is much more rewarding than ever it was. तो वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग है जितना पहले होता था, बट ये कहीं नहीं कहा गया दैट द मीडिया ऑफर्स द बेस्ट करियर फॉर पीपल दोज हु लाइक राइटिंग, इसकी कहीं पर मेंशन नहीं की गई. नाउ द ए ऑप्शन इज द प्रिंटिंग वर्ड इज बोथ गेनिंग एंड लूजिंग पावर. सो गेनिंग कहाँ पर है? स्कूल्स में, जहां पर देखिए पहले तो उन्होंने कहा कि इन द फर्स्ट line itself they have said a pack of video rather than a handbook might be taken to spell the end of any automatic link between industrialization and literacy. Here the media is gaining the power. On the other hand, it is also the case that ever increasing number of people make their living out of writing, which is better rewarded than ever before. सो यहाँ पर वो अपनी पावर गेन कर रहा है. सो दिस वॉज द मेन पॉइंट कि कहीं पर वो अपनी पावर लूज कर रहा है और कहीं कहीं जगह पर वो अपनी पावर गेन कर रहा है. सो आर ऑप्शन द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए. So the next question says, according to the writer, the main problem that schools face today is, first option is how best to teach the skills of reading and writing. How best to incorporate technology into classroom teaching, find the means to purchase technological equipments, and last option is managing the widely offering levels of literacy among pupil. So बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें ऑप्शंस दिए गए हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन से इसकी कितना अच्छा है अगर हम उन्हें रीडिंग और टीचिंग सिखाएं. सेकंड इज कितना अच्छा है कि अगर हम टेक्नोलॉजीज को क्लास में इनकॉपरेट करें, उन्हें ऐसा वो करें, मर्ज करें क्लास के साथ. एंड सी ऑप्शन इज फाइंडिंग द मीन्स टू परचेज, ऐसे तरीके ढूंढना टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स खरीदने के. एंड लास्ट इज मैनेजिंग द वाइडली डिफरिंग लेवल्स ऑफ लिटरेसी अमंग्स पीपल, और डिफरेंट लेवल्स ऑफ लिटरेसी बच्चों में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें मैनेज करना. So let's move to the paragraph without wasting any time. And in the paragraph it says, nevertheless, there is a crisis in literacy and it would be foolish to ignore it. To understand that literacy might be declining because it is less central to some aspects of everyday life and it is not same as equating in the state of affairs. The production of school work with the new technologies could be a significant stimulus to literacy. How should these new technologies be introduced in the schools? Isn't enough to call for computer cam recorders and edit suits in every classroom unless they are properly integrated into the educational culture. They will stand unused. Evidence suggests that this is the fate of the most information technology used in the classroom. Similarly, although media studies are now part of the national curriculum and more students are clamoring to take these courses, teachers remain uncertain about both methods and the aim in this area. So ये हमने हमारा जो पैराग्राफ था वो पढ़ा, उसे समझने की कोशिश की. एंड बेसिकली व्हाट दे हैव सेड इन द पैराग्राफ, आइए इसे डीकोड करते हैं एंड लेट्स गेट इट्स मीनिंग कि इसका मीनिंग क्या है. सो उन्होंने कहा है कि ऑल्दो देयर आर क्राइसिस इन द लिटरेसी एंड, और ये हमारी मूर्खता होगी अगर हम इसे इग्नोर करेंगे, टू अंडरस्टैंड दैट लिटरेसी में बी डिक्लाइनिंग बिकॉज, और ये समझने के लिए कि लिटरेसी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रही है, इट इज़ सेंट्रल टू सम एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीडे लाइफ, इज नॉट द सेम एज एक्वेसिंग इन द स्टेट ऑफ अफेयर्स. और कई लाइफ के कई एस्पेक्ट्स में इट इज़ मोर सेंट्रल, इट इज़ मोर अप्लाइड टू सम एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीडे लाइफ एंड इट इज़ नॉट द सेम एज एक्वेसिंग इन द स्टेट ऑफ अफेयर्स, विच मीन्स कि एक्वेसिंग का मीनिंग है टू एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट एनी protest or without any reluctance,
and in the state of affairs. The production of school work with the new technology could be a significant stimulus to literacy. अगर हम स्कूल वर्क को नई टेक्नोलॉजीज के साथ incorporate करें, अगर उन्हें करें, so it would be a great stimulus. It will it will trigger the literacy, you can say, कि ये literacy को trigger करेगा, उसे stimulus provide करेगा. How should these new technologies be introduced into classroom? और मेन जो पॉइंट है वो ये है, पहले तो उसने बता दिया कि देयर इज डिबेट, एंड सेकेंडली ही सेइंग कि लिटरेसी इज डिक्लाइनिंग बिकॉज इट इज मोर सेंट्रल टू सम पार्ट्स, एवरीडे लाइफ के कुछ पार्ट्स में वो ज़्यादा सेंट्रल है. एंड थर्ड इट इज सेइंग कि अगर हम नई टेक्नोलॉजी को क्लासरूम्स के साथ इन्फ्यूज करेंगे सो इट वुड बी अ ग्रेट स्टिमुलस टू लिटरेसी. अभी तक इतनी बात की है उसने यहाँ तक पैराग्राफ में. एंड आगे उसने क्या कहा है, हाउ शुड दिस न्यू टेक्नोलॉजीज बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द क्लासरूम. आगे क्वेश्चन मार्क. ये नई टेक्नोलॉजीज को कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. इजंट इनफ to call for computer cam recorders and every suit in and edit suits in every classroom unless they are properly integrated into the education culture they will stand unused. So basic idea क्या है, हम सब चीज़ें मंगा लेंगे, सब चीज़ें इकट्ठी कर लेंगे, but they will be unused unless or until we have some method to incorporate them into the classroom or into the educational environment. अगर हम उसे उसका अच्छे से उसे इन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, इनकॉपरेट नहीं करेंगे क्लास में, देन इट विल स्टैंड अनयूज. वो किसी यूज़ के नहीं होंगे अगर हमें उन्हें यूज़ करना ही नहीं आता होगा कि किस तरीके से. एंड उसने फिर एक एग्जांपल दी थी. सिमिलरली ऑल्दो मीडिया स्टडीज आर नाउ अ पार्ट ऑफ द नेशनल करिकुलम and more students are now clamoring to these courses. Means students are showing interest but they are confused somewhere. Teachers remain uncertain about both methods and the aim in this area. So basically ये उसने एग्जांपल दे दी. अगर पूरा एक आप इसकी समरी बनाओगे इस पैराग्राफ की तो क्या था, द बेस्ट टू टीच, हाउ बेस्ट टू टीच द स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग. इसकी कहीं पर भी बात नहीं की गई कि रीडिंग एंड राइटिंग के स्किल्स की. सी एस मीन्स फाइंडिंग द मीन्स टू परचेज, परचेजिंग की कहीं पर बात नहीं की गई. सो ये ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर देंगे. लास्ट ऑप्शन इज मैनेजिंग द वाइडली डिफरिंग लेवल ऑफ लिटरेसी अमंग पीपल. डिफरेंट लेवल्स ऑफ लिटरेसी की कहीं पर भी बात नहीं की गई. बी ऑप्शन इज हाउ बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी इनटू क्लासरूम टीचिंग. और इसकी पूरे पैराग्राफ में इसी की बात की गई है, टू इनकॉर्पोरेट द न्यू टेक्नोलॉजीज, टू फ्यूज द न्यू टेक्नोलॉजीज इनटू द एजुकेशनल एनवायरनमेंट सो दैट कि वो अनयूज ना हो और उसका हम यूज कर सकें अच्छे से, सो दैट वी विल बी एबल टू टीच द स्टूडेंट्स बेटर. और इसी की बात की गई है पूरे पैराग्राफ में. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. सो इसी वे से आपने पूरी की पूरी जो एमसीक्यूज हैं उन्हें करना है. पहले आप एमसीक्यूज पढ़ेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, देन वील मूव टू द पैराग्राफ, उसका मीनिंग समझेंगे, एंड देन वी विल यूज द एलिमिनेशन मेथड. और बहुत ही ईजी होने वाला है आपके लिए अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे. आप ये ढूंढने के बजाय कि कौन सा सही आंसर होगा, सबसे पहले ये ढूंढिए कि कौन सा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, आप उसे क्रॉस ऑफ कीजिए. देन आफ्टर दैट मूव टू द पैराग्राफ एंड रीड इट अगेन. और फिर आपको पता चल जाएगा दैट ओके, दिस इज द थिंग and this is the answer. So that's all from my side, and I hope that this video will definitely going to help you. Thank you.